थैंक यू गीता दीदी। आईडी लगाकर सो जाओ दीदी।
गीता दीदी आईडी लगा दो, कमेंट मत करो दीदी, सो जाओ। 11:30 बजने वाले हो गए, सो जाओ दीदी, कोई बात नहीं। अब मैं भी देखती हूँ उसके बाद। राधे राधे भैया, कैसे हो किरण जी? हम ठीक हैं भैया, आप बताओ आप कैसे हो? गाड़ी मिल गई? बैठ गए हो भैया? गाड़ी अभी लेट है, 2 घंटा, 2 बजे रात को मिलेगी। अच्छा, 2 घंटा लेट है? तब तो काफी रात इंतजार भी करना पड़ेगा आपको। 10 बजे की गाड़ी था, 2 बजे रात को मिलेगी, लेट है। अच्छा, 10, 11, 12, 1, 2, तो 4 घंटा हो गया भैया। अगर 2 बजे मिलेगी, 10 बजे गाड़ी, तब तो 4 घंटा हो गया। सभी आईडी से लाइक कर दिया है दीदी, थैंक यू गीता दीदी, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंतजार करना पड़ेगा फिर। चार घंटा बैठना पड़ेगा, क्या करूँ? हाँ ये तो है भैया, अब तो बैठना ही पड़ेगा जब घर से निकल चुके हैं तो। टिकट है, जब गाड़ी मिल जाएगी तो दिक्कत नहीं होगा, उसमें सो जाऊंगा। हाँ गाड़ी मिल जाएगी तब तो नहीं दिक्कत है, लेकिन स्टेशन पे इतना देर गुजारना मुश्किल हो जाता है। कोई साथ में रहे तो ठीक भी है। मान लो रहने वाले तो बहुत रहेंगे, पर कोई अकेले जा रहे हैं भैया, और कोई है साथ में? जैसे अपने गांव देश का रहता है कोई साथ में तो सही रहता है। मेरा टिकट अकेला ही है। अच्छा, अब तो उधर तो चलो ठंड ही नहीं है, पर ठंड में यही हाल रहेगा। अब इतना इतना देर गाड़ी लेट हो जाता है, इंतजार ही करते रहो।
एक आने वाला था सामने तो बोल रहा था कि नहीं जाऊंगा। अच्छा। आज लाइव में मंजू बात कर रही थी। आज नहीं बात करी हैं, कमेंट से करी हैं, वैसे नहीं करी हैं। अब आप चले गए हैं, अब उनको याद आ रही थी इसीलिए नहीं करी बात। कमेंट से भाई थोड़ा बहुत बात करी हैं बस। अभी तो उनको वैसे नहीं अच्छा लग रहा होगा, इतने दिन साथ में थे। अब अकेले छोड़ के चले गए। उनको अच्छा कैसे लगेगा। अब तो आपकी याद में गीता दीदी लाइव में भी नहीं आई। सो गई होंगी या फिर याद में अपना लेट ही होंगी, जब नहीं आई थी। किसी के लाइव में आईडी भी नहीं लगाई है। हाँ, किसी के में नहीं लगाए थे, मतलब और जिसमें जाते होंगे हमें नहीं पता। गीता दीदी के में आती है ना, तो उसमें नहीं लगाई थी, और बिना बताए लाइव बंद भी कर दी। बोल रही थी खाना, मतलब बैठ के सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊं। तो मैंने कहा समझ गई फिर, वही मैंने कहा खाना सोच रही हैं या भैया क्या याद कर रही हैं। 8-10 दिन तक भटकेगी, उसके बाद फिर सही हो जाएगी। हाँ, वो तो वही है। उसके बाद रहने लग जाएंगे, खुद ही आदत पड़ जाएगी रहने की।
आपका खाना हो गया? हाँ भैया, खाना तो हो गया है सबका। हमारा खाना हो गया, बस आप बताओ भैया, आप रास्ते में है, आप कुछ खाए हुए कि नहीं? खाना तो लेकर आया था शाम को, शाम में खाया है। अच्छा। हाँ भैया सही है, खा लिए हैं, अपना कुछ खाना होगा वैसे भी लेके खा लेना, दूर का रास्ता भी है, गाड़ी भी लेट है। ठीक है दीदी, हम जा रहे हैं सोने, चार्ज पर लगा दिया है मोबाइल। ठीक है गीता दीदी, सो जाओ। कल नहीं, परसों सुबह पहुंच जाऊंगा। अच्छा। कहाँ सोने जा रहे हैं गीता जी? अभी रुको। गीता दीदी, अभी रुको, अभी मत सो, भैया रोक रहे हैं अभी। गीता दीदी। गीता दीदी चली गई लग रहा सोने। मैं भी सोने जा रही हूँ भैया। अब सोऊंगी, जा रही हूँ।
कल ऐसा नींद लगा कि आपके लाइन में आईडी भी नहीं लगा, सुबह 5 बजे। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, सो लिए सही है। वैसे भी आज जगोगे इतनी रात तक। कल देर से भी चलाई थी, कल 11:30 बजे चलाई थी। 11:25 हो रहा था। दिन में भी दिन में आप और उनका सपना जी का लाइव चल जाता है। हाँ भैया, 11 बजे उनका चलता है, 11 बजे हमारा चलता है। गूगल पिन का क्या हुआ? गूगल पिन का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा अभी। 7 तारीख को दोबारा भरवाई थी, 10 दिन हो गया। देख रही हूँ ना, देखूँ और किसी को दिखाऊँ फिर से। कुछ तो गलत हुआ है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। हाँ भैया, कुछ गलत होगा, लेकिन अब दिखाऊं किसी को? कुछ भरने में हुआ होगा गलती। अब दोबारा से, जैसे जब उनसे रोशनी से भरवाई फ़ोन में, मतलब जैसे जैसे बताई थी वैसे वैसे मैं अपना भरी थी। फ़ोन नंबर उस बार नहीं डाला था, फिर बार फ़ोन नंबर डाली थी, लेकिन अभी कुछ नहीं पता चला, 10 दिन हो गया। पता करते रहो, पता पोस्टमैन से। जैसे करें, जैसे आएगा तो कुछ मैसेज आएगा, इसलिए वहाँ तो नहीं भेजी मैंने पोस्टमैन के पास। ये आ गया।
शहर में 1 हफ्ता 10 दिन, गांव में 15 दिन लास्ट। हाँ वही तो, अब यहाँ पता नहीं कैसे लेट हो रहा, मैसेज योगेश से वगैरह पूछ कुछ। कि मैसेज आता है। मैसेज वगैरह कुछ नहीं आएगा। यहीं आओ, लेट जा चुपचाप से। मेरा क्या दिखा? मेरा गांव में 15 दिन में आ गया था। अच्छा भैया, जैसे गूगल पिन भरने के बाद, अप्लाई करने के बाद कोई मैसेज आता है? जैसे कुछ मैसेज आता है जीमेल पे? जैसे वो पोस्टमैन शायद कह रहा था कि जैसे जब वहाँ से भेजता है तो मैसेज आता होगा। अब वैसे कोई मैसेज आया तो नहीं है। कोई मैसेज नहीं आता है, अच्छा। मैसेज नहीं आता है, जब वहाँ गए थे तो कह रहा मैसेज आता है कोई। कोई मैसेज आया होगा, पोस्टमैन पूछ रहा था। जीमेल पर जब $10 हो जाता है तब अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है। हाँ, अप्लाई करने का ऑप्शन तो आया था। जैसे ऑप्शन आया था भरने का। लेकिन जिससे भराई थी जीमेल से नहीं भरी थी, वो स्टूडियो में जाके जहाँ से डॉलर दिखता है, वहाँ पे आया था अप्लाई करने का, तो वहीं से भरी थी। और अब की बार जो रोशनी से भरवाई हूँ वो जीमेल से, वहाँ से जाके भरी थी। क्रोम से कर रही थी, क्रोम से नहीं हुआ तब जीमेल से ही करी हूँ।
क्रोम से जाकर भरना पड़ता है इस बार, अगर नहीं आएगा किसी और को दिखा देना, 3 ही बार भर सकते हैं। अच्छा, और दिखाऊं तब किसी और को फिर, जिसे पता हो इसके बारे में। जैसे रोशनी से अभी जब भरवाई हूँ तो जो भरा हुआ था वही उसके मतलब हटा करके एड्रेस और मोबाइल नंबर यही सब डाली हैं। जहाँ भरा हुआ था वही और काट करके वहीं से भरी हैं फिर। कोई यूट्यूब को आप दिखा दो। आप दिखाऊंगी किसी को, यहाँ तो कोई यूट्यूबर है नहीं वैसे, इधर उधर चलाते हैं जिसको खुद ही कुछ नहीं पता है और चलाते भी होंगे 1-2 लोग, हमें नहीं पता उतना। दिखाऊंगी, एक जने हैं उनको दिखाऊंगी, और थोड़ा दूर पे रहते हैं तो उनके पास फ़ोन करवाऊँ। कितना दिन हो गया रोशनी को भर के? 7 तारीख को भरवाई थी, आज 17 तारीख है ना। 10 दिन हो गया। दस दिन और इंतज़ार कर लो आप। अच्छा, ठीक है भैया, इंतज़ार कर लूँगी और देखूँगी, अगर जाएंगे तो वहाँ भेज दूँगी, नहीं तो फ़ोन नंबर है ना, फ़ोन करवा दूँगी। एक बार पता कर लेंगे।
मे- मेरा गूगल फॉर्म जब अप्लाई हो गया था तो रोज जाकर पूछता था उस पोस्टमैन से, नहीं तो हमारे इधर का बहुत हरामी है, साला रिटर्न कर देता है। अच्छा। यहाँ तो गए ही नहीं पूछने, एक बार वही कही, इतना कहने के बाद तब जाके गए नहीं थे, खाली फ़ोन पे बात किए थे, जब से कभी पूछे नहीं उससे। टेंशन मत लेना, गूगल क्यों आएगा, अगर 3 बार में नहीं आएगा तो दूसरा भी उपाय है। ठीक है भैया, देखूंगी जैसे भी होगा। लेकिन वह उपाय बड़े यूट्यूब लोग को मालूम है। हाँ, बड़े बड़े यूट्यूब को तो पता है। कितना आईडी लगा है, वाचिंग नहीं चल रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, कितना लगा है देखूं। ये 4 आईडी गीता दीदी को हो गया, एक आपका, एक हमारा, 6 आईडी। आज 6 आईडी हैं। वाचिंग 0 पे चल रही है आज, 1 2 या 0। कोई नहीं भैया, अब वाचिंग का क्या कही, यही हाल दिन में भी रहता है, दिन में चलाती हूँ तब भी वाचिंग ही नहीं आता। थैंक यू प्रेम भैया, वेलकम है आपका। डॉलर कितना हो गया आपका? डॉलर 27 हुआ है भैया, 27 था, बढ़ के 36 हुआ था, 36 से फिर 25 पहुंच गया था। यूट्यूब ने अपना तो काटा ही काटा था, 3 से 4 डॉलर हमारा ही काट लिया था। 28 हो गया था, हाँ 28 हुआ था, 28 से ला के 25 कर दिया। अब फिर 27 हुआ है। प्रेम भाई आए तो एक और वाचिंग घटा दिए। हाँ, प्रेम भैया सुनेंगे ही नहीं, रात में बोलेंगे ही नहीं।
कोई बात नहीं भैया, इसमें कोई वैसे नहीं आया है जिसको घंटा के हिसाब से टाइम देना है। चलेगा, जब तक चलेगा, जो मिलेगा मिलेगा। डॉलर नहीं बन रहा है क्या आपका? डॉलर भैया एक बार $3 काटा, एक बार $1 काटा, फिर बीच में $1 काटा था, फिर अब की बार $4 काटा था। 3 3 6 7 8 9 9 $10 तो ऐसे काट लिया, तो डॉलर बनेगा कहाँ से? वो काट क्यों रहा है? ना कोई मैसेज ना कुछ, जो मर्जी से काट ले रहा है। दो महीने तो लाइव चलाई थी बिना ऐड वाला, ऐड लगाना नहीं पता था हमें, क्योंकि जैसे अब इस समय जो अपडेट आया है ऐड लग रहा, ऐसे हमारे में शुरू से ही लग रहा था, हमें पता नहीं था। रोशनी से दिखवाई थी तो कह रहे हैं कि इसमें वो वाला जैसे हमारे सब में लगता है वैसे है ही नहीं। तब 2 महीना ऐसे चलाई हूँ। तब किसी से पूछी थी, इंस्टाग्राम पर से बताई थी, मतलब ऐसे ऐसे लगाना है, स्क्रीनशॉट करके, ओ क्या बोलते हैं उसे, स्क्रीन शेयर करके बताई थी। जब एड लगा है तब जाके एड वाला चलाई हूँ। 2 महीना चला इसे तो उसमें कुछ बन ही नहीं रहा था। कहाँ पर चेक करते हैं? अर्न पे पूरा दिखता है स्टूडियो में। हाँ भैया, वहीं से चेक करती हूँ, अर्न से, लेकिन वो काट ले रहा, पता नहीं क्यों। वहीं अर्न से चेक करती हूँ जहाँ से पूरा डॉलर दिखता है, जहाँ से वॉच टाइम का पूरा दिखता था, वहीं से डॉलर भी दिखता है, लेकिन काट पता नहीं क्यों रहा है बार बार। स्टूडियो में जाके अर्न से वहीं से देखती हूँ। आप गलत जगह देख रही हैं, मैं जगह पर पूरा डॉलर दिखता है। हाँ भैया, वहीं से देखती हूँ, गलत जगह पर नहीं देख रही हूँ। अर्न पे जहाँ पे वॉच टाइम का पूरा दिखता था, जो लाइन बनी होती है, वैसे वहीं पे देखती हूँ। अर्न में जाके जहाँ पूरा डॉलर दिखता है। ये सब चीज़ें पता है, इसमें नहीं दिक्कत है, ये सब बहुत पहले से पता है। बस जब शुरू शुरू में मतलब चैनल बनाई थी, तब मुझे नहीं पता था, तब सोचती थी मेरा वॉच टाइम क्यों काट ले रहा। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करके देखी तो पूरा दिखाया है, तब वहाँ से देखने लग गई। तब हाँ, वहाँ पे पूरा काउंट होता है। उसमें भी मेरा वॉच टाइम बहुत बार कटा है, क्योंकि मेरा साल भर से ज़्यादा हो गया था, वॉच टाइम नहीं पूरा हुआ था, तो वॉच टाइम काट लेता था। जो पहले वाला था, पीछे वाला जोड़ता था, आगे पहले वाला काट लेता था। इतना डॉलर नहीं कटता है जी, हमारा $100 हुआ था तो सिर्फ एक कटा था।
काटता तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों काट रहा। मेरा तो आज टाइम भी बहुत काट रहा था। सबसे ऊपर दिखता है, वहाँ पर लिखा रहता है मिनिमम $100 होगा तो पेमेंट निकलेगा। हाँ भैया, वहाँ लिखा रहता है, देखी हूँ, सब डॉलर बना रहता है, लाइन जो नीली वाली लाइन होती है वो भी रहता है। और जो क्या कहते हैं, सुपर चैट वाला कुल खोलते नहीं है डॉलर और सुपर चैट, और क्या बोलते हैं उसे, वो सब चीज़ें सब रोशनी ने खोला था, देखा भी था। अभी सो जाओ आप। रोशनी के पास आपका ईमेल आईडी है क्या चैनल पर? नहीं, उनके पास तो नहीं है। उनके पास नहीं है भैया, जैसे मतलब दिखाना होता है तो स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ व्हाट्सएप पे। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो वहीं से सारा अपना देख लेती हूँ।
वाचिंग जीरो की हो गई। ठीक है भैया, म्यूट करके सो जाऊं, सुबह उठना रहेगा। वाचिंग भी नहीं आ रही सही से। जब तक आपका जीमेल आईडी नहीं रहेगा कैसे करेंगे अप्लाई? अप्लाई भैया ऐसे करी थी, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोन किया, वीडियो कॉल, उसके बाद स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, तो स्क्रीन शेयर करने के बाद उनके फ़ोन में सारा दिखता है। ठीक है, तब जहाँ जो करना होता है हमें बता देती हैं कि हाँ ये डालो, यहाँ वो डालो, तो मैं अपने से डाल देती हूँ। बस वो सारा बताती जाती हैं, मैं अपना करती जाती हूँ, जैसे जैसे बताती हैं क्या भरना है, क्या डालना है वहाँ पर, तो सब बता देती हैं। जैसे वीडियो कॉल पे सारा दिखता है, वैसे ही स्क्रीन शेयर करने के बाद उनके फ़ोन में सारा दिखेगा। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ तो सारा बता देती हैं। चलिए ठीक है भैया।
कमेंट मत करो भैया, बहुत रात हो गई है, अब तो सो के भी नहीं। ऑन करके छोड़ दो, वैसे आपको जब निकालना होगा तो निकाल लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो, नहीं तो ऑन छोड़ दो। अब मैं भी सो लूँ, नहीं सुबह 5 बजे उठना है।